चलो अभी हम लोग एयर फिल्टर देखते हैं, अपना एयर फिल्टर का हालत क्या है। ऐसे ऊपर तो बहुत गंदा है गाड़ी, लेकिन लेट्स चेक द एयर फिल्टर हाउ इज़ इट। तो देखना है मेरे को, बहुत दिन चेक नहीं किया। वैसे तो साफ़ करना है, ब्लोअर से साफ़ करने को रहता है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ब्लोअर नहीं है, तो वैसे ही क्लीन कर देता है। थोड़ा मारता हूँ इधर। माय गुडनेस, यहाँ पे देखिए कितना गंदा हो गया। तो मार के देखता हूँ थोड़ा। ओह, कितना धूल निकल रहा है, देखिए। आप लोग अच्छा से देख नहीं पाएगा, लेकिन बहुत धूल निकल रहा है, गंदा हो गया काफ़ी। देखिए, ज़्यादा हो जाता है तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा धूल हो जाएगा देन वी वोंट बी एबल टू, आई मीन द इंजन वोंट बी एबल टू गेट फ्रेश एयर सर्कुलेशन कम हो जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम आ जाएगा गाड़ी में। तो इसीलिए एयर फिल्टर को भी क्लीन करते रहना है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द राइट वे टू क्लीन, बट आई हैव नो ऑप्शंस। I have no options right now, so I'm cleaning like this. So चलो देखते हैं अभी। It's been long time, गाड़ी का कोई सर्विसिंग नहीं हुआ, तो इसीलिए गंदा है बहुत। चलो इसको लगा देता हूँ। एक ही हाथ से कर रहा हूँ, इसलिए तकलीफ हो रहा है। तो फिर भी एक हाथ से कर सकता है कि नहीं, देखते हैं। चलो, आराम से कर सकता है। इसको उठाना है बस, एंड देन इसको। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू क्लीन योर एयर फिल्टर, बट गाड़ी पुराना हो गया तो ज़्यादा सर्विसिंग को भी नहीं लेके नहीं जाता। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू क्लीन योर एयर फिल्टर। फिटिंग हो गया है। फिटिंग होने के बाद यहाँ पे ऐसा फिक्स द लॉक, इसको फिक्स कर देना है। यहाँ पे भी जस्ट फिक्स द लॉक। अपना जो ब्रेक ऑयल है ये मिनिमम लेवल के ऊपर है, ठीक है। एंड देन अगेन इसका कितना हाल है। ओह माय गुडनेस, रिज़र्व है ही नहीं, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। इसमें भी कूलेंट डालना पड़ेगा, कि रिज़र्व कूलेंट रखना बहुत ज़रूरी है। इसको भी डालूँगा बाद में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज चेक योर कूलेंट लेवल्स। सबसे पहले तो इंजन ऑयल चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन एयर फिल्टर, देन कूलेंट। और अबाउट द बैटरी कनेक्शंस आर कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी when you start the engine, the coolant becomes hot actually. ये गर्म हो जाता है, तो इसको खोलना नहीं। You should not open this when the engine is on. ये भी बहुत गंदा है भाई। चलो let's try to open this. This is cool. Last time someone was asking me how to drain the oil from this container, so even I have not tried this. I think it's some complicated process. I'll have to ask the mechanics and all, but that's cool. I just checked the level of this oil. If it's below the minimum level, then one signal comes to the indicator. You will see that brake light, handbrake light, always stays on whenever the brake oil level comes down below minimum. So that's cool. Got back, get inside the car again.
OMG. This is really irritating sometimes. So just now I was talking about the brake oil. Whenever the brake oil comes below the minimum level, as per my experience, this this handbrake signal, this signal won't go off. Actually, it goes off on and off. It happens. Last time it happened to me also. The brake oil was below the minimum level, and then what happened is this red light, it was like on and off every time. It was not going off completely when you release the handbrake. Even while driving, this red light, this used to be on only. It blinks sometimes. So I went to the service center and I just told that mechanics on roadside, and that guy told me like it might happen. Even he was not sure. I think he was not experienced. He told me that might happen because your black brake fluid level might be less. Then I've checked that and I poured one small bottle of brake oil, and then the problem was solved. So you guys should check all this. Whatever the body is, the engine should be good, man. That's what. Okay then, that's all for now. Thank you. अच्छा, इसका फोटो लेना भी तो ज़रूरी है। इसका फोटो लेना है, फोटो